part of the country where there may be factors which perhaps are local, we are very happy to help out. बट केंद्रीय सरकार की तरफ से हमारी कोशिश यही है कि इस योजना को मैक्सिमम हमारे बहन भाई जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको इसका लाभ मिले और इसके लाभार्थी मिले। और मैं पर्सनली आई एम रेगुलरली इन टच विद द नेशनल फेडरेशन, अरविंद सिंह जी एंड ऑल दोस। और हमको कभी किसी इन डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी या ग्रीवेंस कमिटीज में थोड़ी सी वहां पे काम ज्यादा तेजी से नहीं हो रहा, मैं उनके मुख्यमंत्रियों को भी चिट्ठी लिखता हूं। बट आई बी हैप्पी टू सिट विद द ऑनरेबल मेंबर एंड लुक एट एनी स्पेसिफिक इश्यूज व्हिच माइट। ओके, माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने ठीक कहा कि इसका आंकड़ा और हम बढ़ाएंगे, क्योंकि यह देश 140 करोड़ का देश है और इसमें 56 लाख का 1 करोड़ से काम नहीं चलेगा, क्योंकि शहर में रहने वाले इस तरह के कारोबार करने वालों की संख्या करीब 10 करोड़ से ऊपर है। तो इसको तो बढ़ाना अनिवार्य है ही, लेकिन माननीय मंत्री महोदय अनिवार्य है ही, लेकिन माननीय मंत्री मेरा क्वेश्चन है महोदय कि मेरा क्वेश्चन है महोदय में 5000 लोगों ने आवेदन सभा में 5000 लोगों ने आवेदन, जिला मेरे ही क्षेत्र में आता है और औरंगाबाद जिला का क्षेत्र में आता है और औरंगाबाद जिला का 5000 लोगों ने दिया था, जिसमें और 5000 लोगों ने दिया था जिसमें महोदय और 2000 लोगों को नहीं हुआ हो और बाकी लोगों को नहीं हुआ हो और वो 2 साल पहले बैंकों की लापरवाही के चलते तो बैंकों की लापरवाही के चलते कहा कि देश के अंदर तो हमने कहा कि लापरवाही कर रहा है इस योजना को, इसको लापरवाही कर रहा है इस योजना को लागू करवाई करना चाहिए, सरकार कार्रवाई करना चाहिए। मैं हिंदी में बोलता हूँ, पंजाबी में बोल सकता हूँ, बंगला में भी बोल सकता हूँ, पंजाबी में नहीं आएगी जो मैं बंगला में भी बोल सकता हूँ। देखिए, आपको पसंद नहीं आएगी जो मैं जनसंख्या टोटल जो है, देश की जनसंख्या टोटल जो है 140 करोड़ आपका सही है, और उसमें कहना कि 140 करोड़ आपका सही है, और उसमें कहना कि हमारी रेडी पटरी के 10 करोड़ हमारी रेडी कारोबार करने वाले, मैं माफी चाहूंगा, ये कारोबार करने वाले मैंने आपको बताया 2014 की एक्ट पे जब हम लोग काम कर रहे थे, 2014 उस समय पे जब हम लोग काम कर रहे थे, उस समय भी हमने किया था 2% हो सकती है, उस समय भी अगर हमारी शहरी 2% हो सकती है, अगर हमारी शहरी 45 करोड़ है, उसका भी सेंसस में पता लगेगा, 45 करोड़ लाख हो सकते हैं, सेंसस में पता लगेगा, 90 लाख की तरफ 90 लाख हो सकते हैं, हम इन 90 लाख दूसरी बात दूसरी से ले जा रहे हैं। आपने दूसरी बात आपने कहा कराकर आपने बात की, मैं आपको जो आंकड़े मेरे पास हैं आपने बात की, मैं आपको जो आंकड़े मेरे पास हैं 2219 फीमेल, 5219 फीमेल, 5214 लोन्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज 43 को, 2192 बेनिफिशियरीज, टोटल अमाउंट डिस्बर्स्ड, टोटल अमाउंट 0.47 करोड़। मैं आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट की दे सकता हूं, 0.47 करोड़ मैं आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट की दे सकता हूं, मेरे पास है। और हमारे जो बॉडी ऑफ द आंसर है उसमें भी हर एक स्टेट के बहुत डिटेल्स में आंकड़े दिए हुए हैं। बाकी जो है आप ये देखिए कि ये जैसे ही ये योजना का निर्णय लिया गया है, बहुत ही जल्द ये सफल हो गई है। और अभी भी मैंने जैसे बताया कि ओरिजिनल टारगेट था 42-43 लाख लोन्स, वो उस समय टारगेट था। अभी ऑलरेडी हम लोग 56 पे पहुंच गए फर्स्ट लोन, सेकंड और थर्ड बनाए तो 74 पे पहुंच गए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय हम बैंक्स के साथ बात करके, जो एनबीएफसीज हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले ऑर्गेनाइजेशन से बात करके हमारा कोशिश रहेगी कि इसको जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स इसका फायदा ले जाना चाहे। पर शायद मुझे लगता है कि कुछ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये हर एक स्ट्रीट वेंडर शायद इसका अप्लाई करने की जरूरत उनको नहीं पड़ती हो। महामारी के दौरान क्या हुआ था, क्योंकि उनका कारोबार पूरा बंद हो गया था, उस समय जो पहला लोन लिया 10,000 का, उसमें उन्होंने उसको अपने बाकी लोन्स लौटाने में कोशिश की। अभी 2 स्टडीज जो आई हैं, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद और
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिनके चीफ इकोनॉमिस्ट और हमारा जो बॉडी ऑफ आंसर है उसमें भी अनुसार ये बहुत सफल स्कीम है। आंकड़े दिए हुए हैं 43% जो है बेनिफिशियरीज जो है आप ये देखिए हमारे ओबीसी जैसे ही ये महिलाएं 44% निर्णय लिया बेनिफिशियरीज हैं। अगर आप एससी जल्द भी मिला दे तो सफल हो गई है। और अभी भी मैंने लाभार्थी हैं बताया ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी को हो जाते हैं। टारगेट दूसरी बात 43 लाख लोन्स वो उस समय टारगेट था। अभी ऑलरेडी हम लोग 53 लाख 56 पे पहुंच गए फर्स्ट लोन, सेकंड और थर्ड बनाए तो 74 पे पहुंच गए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय हम बैंक्स के साथ बात करके जो एनबीएफसीज हैं प्राइवेट सेक्टर वाले ऑर्गेनाइजेशन से बात करके हमारा कोशिश रहेगी कि इसको जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स इसका फायदा ले जाना चाहे, पर शायद मुझे लगता है कि कुछ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये land holdings were very wide, very शायद huge इसका land होल्डिंग्स अप्लाई करने की जरूरत उनको नहीं पड़ती हो। महामारी के दौरान क्या हुआ था क्योंकि उनका कारोबार पूरा बंद हो गया था, उस समय जो पहला लोन लिया 10,000 का उसमें उन्होंने उसको अपने बाकी लोन लौटाने में कोशिश की। अभी 2 स्टडीज जो आई हैं इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिनके चीफ इकोनॉमिस्ट ने स्टडी की है, उसके अनुसार ये बहुत सफल स्कीम है। इसमें 43% ऑफ द बेनिफिशियरीज जो है वो हमारे ओबीसीज हैं, महिलाएं 44% बेनिफिशियरीज हैं। अगर आप एससी एसटी को भी मिला दें तो 60-70% इसके जो लाभार्थी हैं वो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी को हो जाते हैं। दूसरी बात, जिन्होंने भी ये योजना का लाभ लिया है, their credit spending is also whoever comes after 71 would be an illegal immigrant. No benefit, nothing. Only when we go by these figures, and you will be deported. चलिए माननीय मंत्री जी, But their contention that they are changing the political scenario, political representation, etc. Therefore, my lord, this via media was founded for 10 years. Namely, till the decision of foreign tribunal is taken, क्योंकि हमने पिछले you will 3 not वर्ष का have a पूछा right है of और उस हिसाब से अगर झारखंड की हम बात करें तो सिंहभूम में बहुत कम वेंडरों ने ये लोन लिया है। इसके क्या कारण है? और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से करना चाहूंगी कि क्योंकि ये 2020 में ये योजना शुरू हुई, उस वक्त कोरोना काल था और वैसे में कई वेंडर जो लोन लिए उनका काम बंद हो गया या अतिक्रमण के नाम पर उन वेंडरों को हटा दिया गया, तो वो लोग अपना पैसा चुका नहीं पाए, ऋण चुका नहीं पाए, जिनके वजह से उनका सिविल खराब हो गया। तो क्या सरकार के पास वैसे वेंडरों की कोई सूची है, और अगर है तो उन वेंडरों के लिए सरकार क्या प्रावधान कर रही है ताकि वो पुनः लोन ले सके और अपना व्यापार पुनः शुरू कर सके? Major General was Honorable Speaker, sir, the figures for Mr. Jacob Jharkhand Singhbhum, I would like to inform the honourable members, 1,270 males and 514 females. Total number of loans disbursed is 1,784. Number of beneficiaries, the figures for total number of loans disbursed, all these figures I am very happy to share with her, and I think there is a misunderstanding. जो इस योजना में NPAs बनते हैं, NPAs क्या है कि आप पहला लोन लेते हैं 10,000 रुपए का और आपको मान लीजिए 1 साल में उसको लौटाना है, तो ये कोलैटरल फ्री है, तो आपको 1 साल में लौटा देते हैं तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलता, तो आप दूसरा लोन जो है 20,000 का अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरीके आप 10,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 का तीसरा लोन 80,000 लेके ये हमारे जो सबसे वल्नरेबल सेक्शंस थी हमारी सोसाइटी में महामारी के दौरान, ये माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बन गए। और जो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की स्टडीज को देख रहा था, उनकी जो क्रेडिट स्पेंडिंग है एक्सेट्रा, तो उसको आप देखें तो इससे हाईली दूसरा इसीलिए सिविल स्कोर इसमें नहीं, कोई इसमें एनपीएस नहीं बने हैं और इसमें सिविल स्कोर इसको कंसिडर ही नहीं करते हैं लोन में, ये कोलैटरल फ्री लोन्स हैं। मैं समझता हूँ किसी 6 and 7 I'll just orally say somebody can say that I don't want to get benefit of this, that's all. Nobody is questioning 6 and 7, and Lord, it is very clear from the section that after 71 all are illegal immigrants subject to being so declared
माननीय मंत्री जी, Now we've got these आप सभी माननीय सांसदों से their आग्रह arguments and address these submissions. एक परिपत्र दोबारा जारी करें और ये स्कीम बहुत अच्छी है, इससे गरीबों के जीवन को परिवर्तन किया जा सकता है और सभी माननीय सांसद इसमें सक्रिय रूप से भाग लें और force in 2013. Lord, I wanted to answer that question so that I can complete the chronology. Lord, your lordships have seen that 6A will be operated as per the rules framed under section 18. परिपत्र जारी कर और सभी माननीय सांसदों आग्रह करें ताकि हम लोगों के, गरीब लोगों के जीवन को परिवर्तन कर सकें। ओके, मैंने दे दिया आपका सारा जवाब, धन्यवाद। Because my lord, the first impression of everyone was that what happened till 2013. Even the rules are 2009. So there was no vacuum. My lord, that's all I wanted to say. My lord, nothing may possibly turn on that. But just to complete the history, my lord, and the chronology, Lord, Section 6A says that this process will be done as per the rules made under 18 देश भर की नदियों को आपस में जोड़कर that is, my lord, ड्राउट और इरिगेशन की समस्या 18 से निजात के लिए 18EE. उसके लिए 2002 में योजना बनाई। It says 18, but EE, my lord, is I have found. कॉन्स्टिट्यूट भी किया गया। It's not entire 18, but 18EE रीजन was के also जितने नदियां उनको जोड़ना था। सेकेंड And फेज that came in by the में same नॉर्थ के amendment. नदियों को जोड़ने का बात हुई। Now, लेकिन immediately अटल जी का thereafter, सरकार चाहते ही citizenship ये सारा rules were काम बंद हो framed गया था। in 1956 were 2014 amended. I'm sorry. में नरेंद्र मोदी Citizenship जी rules देश के were प्रधानमंत्री बनते already ही in अटल जी का existence since जितना भी 1956, इनकम्प्लीट काम but था they उसको were उन्होंने amended कदम to bring उसको it in उठाया conformity with और newly सितंबर inserted section 2014 6A. में केंद्र सरकार द्वारा देश भर की नदियों को जोड़ने के लिए स्पेशल कमेटी If your lordships would, कॉन्स्टिट्यूट किया गया like to और have the अप्रैल date, they were 2015 में amended on एक इंडिपेंडेंट 15th of वर्किंग ग्रुप January कॉन्स्टिट्यूट किया गया। 1987 मेरा आपसे ये सवाल to give है, effect to, my lord, देश भर की section नदियों को 6A. आपस में जोड़ने का That जो your मिशन lordships would है, find जो प्रोजेक्ट है, उसमें अब तक क्या Volume प्रोग्रेस है और 4C. क्या प्रोजेक्ट को टाइम बाउंड पूरा करने को लेकर कुछ तय किया गया है क्या? माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, वॉल्यूम हालांकि 4C प्रश्न जो है वो पेज 3 बांधों में पानी के स्तर को लेकर के, रिजर्वायर्स को लेकर के था, Page लेकिन 3, it माननीय starts at सदस्य ने page जो 3. प्रश्न किया है I'm not, तो निश्चित Lord, ही अत्यंत महत्वपूर्ण none of है, us इसलिए मैं either सदन side, की Lord, are जानकारी के required लिए to निवेदन करना go through चाहता हूँ। 4C, वॉल्यूम जैसा 4C. माननीय सदस्य ने कहा है कि स्वर्गीय अटल जी का सपना था कि देश में सरप्लस Please बेसिन come से to डेफिसिट बेसिन पर पानी internal ट्रांसफर page करके 8. देश की जो PDF एक page 8. वार्षिक समस्या है, चुनौती देश के सामने है कि लगभग देश के 16-17% हिस्से में हर साल अकाल पड़ता है और लगभग इतने ही हिस्से में हर साल बाढ़ की ऐसी 16 स्थिति capital बनती है। D was तो inserted. एक संतुलन और साम्य जो है वो देश में लाया जा सकता है। और जैसा माननीय सदस्य ने कहा, अटल जी की सरकार जाने के बाद में क्योंकि 10 साल तक उसे रोक दिया गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने पुनः इसको प्रारंभ किया। 31 लिंक ऐसे देश भर में आइडेंटिफाई किए गए थे जहां सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन में पानी ट्रांसफर किया जा सकता है। उन सब की PFRs बनी, उनमें से 15 से ज्यादा लिंक्स के लिए DPR बनाएंगे और DPR बनने के बाद में हमने राज्यों के साथ में उनको शेयर किया। These are the rules of क्योंकि हम सब 56 जानते हैं कि amended in भारत में 87 संविधान प्रदत्त व्यवस्था के deal अनुरूप with जल 6A राज्य का विषय है, इसलिए राज्यों को पहले उस पर where सहमति in बनाने case के of a बाद में person ही seeking उस पर आगे registration बढ़ा under जा सकता subsection है। 3 of section 5 6A ऐसे प्रायोरिटी लिंक डिसाइड किए गए थे और उन 5 प्रायोरिटी लिंक्स में से मैं आज सदन को प्रसन्नता के साथ में अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री I may not read, but there is a reference के माननीय provision मुख्यमंत्री because nothing शिवराज turns सिंह on जी ने that. Then दोनों राज्यों के बीच 16E में is jurisdiction एक of the tribunal, which क्षेत्र says जिस that it क्षेत्र could में पानी की decide the सर्वाधिक कमी reference इस देश में under ऐसा माना जाता subsection था, 3 उस of बुंदेलखंड section के 6A. 60 Last लाख line, लोगों Lord. के पेयजल और 2 लाख पेयजल। से ज्यादा हेक्टेयर जमीन सिंचित हो सके, इस दृष्टिकोण से दोनों राज्यों के So बीच please में see माननीय प्रधानमंत्री जी की 16F. उपस्थिति में
एक समझौता registering authority for the purpose of section 45,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी मिली। माननीय प्रधानमंत्री जी ने please come to two sub rules. क्षेत्र की आवश्यकता को महसूस करते हुए उसके लिए 90% ग्रांट of section 6A of the Act shall be filed in form 23 by the person with the registering authority for the district in which he is ordinarily resident within 30 days from the date of his detection. इसी तरह से राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में एक प्रायोरिटी लिंक की डीपीआर बनाने के लिए भी राज्यों से समझौते के लिए आग्रह किया है। राज्यों के साथ में राज्यों के द्वारा आपस में एमओयू हो जाने के बाद निश्चित ही अटल जी के सपने को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्तमान there was a time limit prescribed for registration. If I am declared a foreigner and therefore entitled to the benefit of 6K, नीति आयोग I की have to रिपोर्ट get it registered within 30 days. में कहा गया But the government from the file भारत में वाटर it appears, डिमांड and जो I है have सप्लाई से those 2 गुना documents अधिक हो जाएगी। that there were concerns that it is not possible to do it within 30 days. के लिए सेंट्रल So गवर्नमेंट though we द्वारा are declared, कई we have स्कीम्स चलाए a गए order हैं। of the tribunal, वाटर we का are unable to get सब्जेक्ट होने के ourselves कारण registered. स्टेट और लोकल लेवल पर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन न होने के कारण स्कीम्स का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। मेरा माननीय मंत्री से ये पूछना है कि ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करने के लिए क्या कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करने पर गवर्नमेंट विचार कर रही है। ऑल्सो देश के वाटर की डिमांड और सप्लाई का जो अलार्मिंग गैप है इसको लेकर रेन वाटर कंजर्वेशन और हार्वेस्टिंग के लिए आज आवश्यकता है फोकस्ड एजुकेशनल इंटरवेंशंस की, लोगों को एजुकेट करने की, जन भागीदारी बढ़ाने को लेकर गवर्नमेंट द्वारा क्या स्पेसिफिक स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। Nothing, my lord, may turn on that, my lord, but just to complete. निश्चित रूप से माननीय सदस्य की चिंता कि देश की बढ़ती हुई पानी की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए और एक ऐसे कठिन दौर में जब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज के दौर से गुजर रही है, उस समय में जब हमारी चुनौती और भी बड़ी है और चुनौतियों के बढ़ने के अनेक कारणों में हमारी बढ़ती हुई आबादी, बढ़ता हुआ शहरीकरण, बढ़ता हुआ औद्योगिकरण और इसके साथ साथ में पूरी दुनिया का अगर मानचित्र आर्थिक प्रगति का देखा जाए तो दुनिया की आर्थिक प्रगति में जिन देशों ने प्रगति की है उसकी बढ़ती हुई इकोनॉमी का ग्राफ, उसकी बढ़ती हुई बिजली की आवश्यकता के ग्राफ और बढ़ते हुए पानी की आवश्यकता का ग्राफ 32,537 number of persons were declared ऐसे illegal में जब माननीय immigrants प्रधानमंत्री जी के pertaining to नेतृत्व में हमारा देश 6671. दुनिया So की there are other सबसे data also तेजी in my से बढ़ती हुई affidavit. अर्थव्यवस्था I'll show, my lord. और Streamed by the foreigners tribunal. 3 से Of 5 this, 12,914 number of persons have registered themselves with the registering authority. The remaining persons could not register with the registering authority due to variety of reasons, including expiration of limit of period of 30 days for registration. As a result, a number of cases have been filed before the Guwahati High Court indicating reasons as to how they could not register with the registering authority and praying that limit of the days for registration be relaxed. It would be difficult to repatriate or deport these category of persons to Bangladesh in view of the understanding between the two countries that persons who came to India up to 24th March 71 would not be repatriated to Bangladesh. Eventually, these persons will become stateless persons if they are not allowed to register with the registering authority. This is a genuine difficulty being faced not only by the state government but also by the identified persons. In view of the above stated positions, it is proposed that rules may be relaxed as suggested in para 5 of the notes on page 1920 and is note section. जल और वर्षा जल के भूगर्भ में पुनर्जनभरण को लेकर जो गतिविधियां हुई उसके चलते हुए मैं आज सदन को प्रसन्नता के साथ सूचित करना चाहता हूं and thereafter they were amended जल का जो गिरता हुआ ट्रेंड था पिछले 4 साल से लगातार वो ट्रेंड न केवल ठहरा है अपितु वापस रिचार्ज होने की दिशा में बढ़ा है। आज जो ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक थे या क्रिटिकली एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक थे या सेमी क्रिटिकल एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक थे उन सब में पॉजिटिव ग्रोथ हुई है। जो गिरने वाले ब्लॉक्स की संख्या में सुधरने वाले ब्लॉक्स की संख्या बढ़ी है। लेकिन निश्चित रूप से हम विभिन्न इंटरवेंशन के माध्यम से पानी का उपयोग, हम संचित पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करें और एक एक बूंद पानी से अधिकतम लाभ ले सकें।
इस दृष्टिकोण से जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में योजनाएं बनाई गई है, हमने जिस तरह से माइक्रो इरिगेशन को एक्सपैंड करने के ऊपर काम किया है, जो उपलब्ध पानी है उस उपलब्ध पानी का अधिकतम उपयोग हम कैसे कर सके, क्योंकि पानी एक सीमित संसाधन है। उस सीमित संसाधन की सीमितता को देखते हुए उपलब्ध पानी का अधिकतम उपयोग कर हम किस तरह से अपने देश में जो है पानी को निर्बाध आपूर्ति कर पाए, इस दृष्टिकोण से भारत सरकार सतत चिंतन मनन करते हुए काम कर रही है। If they were not conferred citizenship, they would be rendered stateless because they would not be going back to Bangladesh. And therefore, it was in that sense a solemn obligation which was undertaken by India in terms of an understanding with Bangladesh that pre-25 March 2071 would remain. And then we must also read it in the context of entry 10 of list 1, which says foreign affairs. All matters which bring the union into relationship with the foreign country. And therefore the power under Article 72, the executive power would also extend to entry 10. So there is an international understanding between the then Prime Minister of India and the Prime Minister of Bangladesh. सर व्हाट आई 75 तालाबों का अभियान चला था अमृत महोत्सव में, कई माननीय सांसदों ने अच्छे काम किए। Sir, the main context of the question of extend the time and give them more time to was interlinking of the rivers throughout the nation, which was You proposed couldn't once push them out back to Bangladesh by because that Atal was not Bihari the Vajpayee. obligation which was assumed by Bangladesh. It was followed up Therefore, by the instead of next making them government as also. stateless persons But in India, whether at least this bring them into the proposal is mainstream at by all conferring the viable? citizenship on them. It Is it just as a That's proposition all of law the- doesn't arise here. possible which can be Doesn't arise implemented here. in the country? If so, how far you have taken the lead or progress in this proposal? शॉर्ट में बता देना आप। देखिए 71. जल Post संसाधनों का 1971, अधिकतम उपयोग हो there's सके no और हम question दोहन of कर सके। मैंने पूरे 68 doesn't विस्तार से confirm. Bangladesh किया था। agreeing to take them देश back, में not लगभग agreeing to take them 16-17% back. They हिस्सा don't ऐसा have- होता है जहाँ हर They साल don't बाढ़ even आता है। agree to take them back. और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वैसा देश भर में लगभग इतना ही हिस्सा ऐसा है जहाँ हर साल सूखे की चपेट होती है। Yes. हम So they इस तरह are से एक illegal वाटर immigrants. ग्रिड बना करके एक And सामने therefore, at some उपस्थित कर point, we'd like to know सके। from the इसके ऊपर government what is the बहुत government लंबे doing in respect of डेलिब्रेशन those होकर के persons. Because विचार their होकर के इस grievance, तरह का निर्णय हुआ है। और मैं regard मानता to हूँ the कि really इस serious ये issue, सारे लिंक्स अगर we सभी have राज्य said सहमत हो what we जाएं are doing, और ये but सारे something लिंक more बना is दिए required to जाएं be तो देश के जल Because संसाधनों की जो the- चुनौती है वो there चुनौती is जल की उपलब्धता demographic की change and चुनौती को हम आने वाले सदियों there are तक के several लिए address problems. कर सकते हैं। Therefore, I started by M.K. saying Vishnu that Prasad- their concerns, their problems are not बहुत लंबी being, चर्चा होगी I'm not क्योंकि trivializing. I'm अगर इस तरह saying से they are चलेंगे correct तो अपने problems. 20 I'm only defending 6A, that's all. Just limited to मंत्रियों से भी आग्रह माननीय Honorable सदस्यों Prime का Minister आग्रह Bangladesh संसद also में acknowledges this fact Yes. that there are क्वेश्चन scores of नंबर others who 64 entered illegally thereafter. श्री मन्ने Whenever श्रीनिवास they रेड्डी say, whenever Solemn undertaking was that they had been taken back. माननीय मंत्री whenever जी Bangladesh, धन के the पटल पे sovereign of रखा गया Bangladesh मैंने says that before 25th Komti March 71, Venkat we will Reddy. take them back. It implicitly Shri Vidyut gives an Maran Mahato. assurance that after that nobody will be Vidyut permitted to Maran cross Mahato. over. That's how the international relations operate. माननीय मंत्री से Also, Mr. Solicitor, there is one other dimension that pre-25 March 1971 would comprise of two groups. People who have been granted citizenship, everybody before 66 becomes a सिंचाई citizen. सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्रबंधन है After जो मुख्यतः आदिवासी 1166, किसानों की गाजिया स्थिति खरकाई नदी qualifies for being considered for the grant of citizenship provided पर conditions वर्ष are. Those who are 2019-20 granted citizenship 500 would करोड़ लागत become से part भारत of our बनकर तैयार mainstream. है। Those who were not पिछले granted 3 वर्षों citizenship से मूड़ाकाटी शाखा can't नहर push नहीं them out बनने के anyway, कारण because Bangladesh is not सारे going to take किसान them back. इस सिंचाई Then, my lord, सुविधा से it's not वंचित necessary हैं। for them. Their विगत agreement 4 is not वर्षों से necessary. आप औपचारिक माननीय If they are प्रश्न not पूछे ना granted सदस्य। citizenship, मैं माननीय it would not be मंत्री जी possible. से That contingency may not आग्रह करना arise चाहता हूं because कि if he is उक्त unable to योजना show को that he is a foreigner, क्या जल्द से Then, जल्द my lord, he is a नहर citizen निर्माण of India. करने का काम करेंगे ताकि if उस suppose क्षेत्र के somebody किसानों को suspects फायदा that मिल सके। so and so is a Bangladesh, सभापति I go to the foreigner इस तरह trap. की He says, no, योजना you का are not a निर्माण foreigner. करना, डीपीआर That means I am a बनाना, उस citizen. योजना को लागू करना, नहरों If का I am a सीप foreigner, जो before है, 71, जाल I'll get the खड़ा protection करना of और सिंचाई की सुविधा को 6A.
And if I am declared a foreigner after 25th March 71, then I'll have to be, my lord, as per law, इस तरह का कोई भी प्रपोजल अभी भारत सरकार में लंबित नहीं है। माननीय सदस्य, please now come to, my lord, some facts and figures. Volume 3, the affidavit filed by State of Assam. It starts at page 969. गंडक कैनाल है, Lord, there are several affidavits नेपाल filed. की तरफ से पानी आता है 15,000 क्यूसेक, और उसके लिए 8,000 क्यूसेक बिहार का है, लेकिन पानी बिहार तक नहीं पहुंचता है। बार बार मैं इश्यू उठाता हूं, पानी चोरी हो जाती है। और उसके लिए एक बड़ा प्रस्ताव सेंट्रल वाटर कमीशन और गंगा फ्लड कंट्रोल से, क्योंकि मेरा जिला सबसे अंतिम है और सबसे कम सिंचाई की व्यवस्था है, भारत सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिससे विमर्श समय समय पर होता रहा है माननीय मंत्री जी से, और इनकी भी संवेदना। और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत क्या भारत की सरकार इस दो बड़ी योजनाएं जो गंडक कैनाल के Lord, this is the affidavit dated 5th December, affidavit dated 2014, December, page 969, volume 3, page 969. There are several affidavits filed by both. There are several affidavits filed by both State of Assam and the central government. But I am not troubling your lordship with central government. But I am not troubling your lordship with other contents, my lord, which are not. Other contents, my lord, which are not. 969. 969. Affidavit dated 5th December. Affidavit dated 2000 December 2014. माननीय सदस्य ने जिस विषय को लेकर के प्रश्न किया है, उस योजना की डीपीआर बन के जो पहले इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस 2012 में हुआ था, वो बहुत ज्यादा पुराना होने के जाते कॉस्ट जो है रिवाइज कॉस्ट करके उसके रिवीजन को वापस करना और एक बार फिर नए सिरे से इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस देने की आवश्यकता थी। प्रपोजल के लिए वापस जो है एसडीस को the relevant part would be page 982. I'm not going to read anything. I'm not going to read anything. Which was placed before your lordship. And whatever is relevant for the present purpose, and whatever is relevant for the present purpose, my lord, and whatever pertinent queries, my lord's pertinent queries, my lord, because affidavits are very long affidavits. Affidavits are very long affidavits. Page 980 program में प्रोजेक्ट है बटेश्वर पंप नहर योजना। Page 980. पिछले 20 साल से वो नहीं बन पा रहा, जिसके कारण number of cases before the foreigners tribunal and their foreigners tribunal and their disputes pertaining to January 1 pertaining to March January 71 to refer to the foreigners tribunal between refer to the foreigners tribunal 31st July 2014 31st July, because this affidavit is filed in December, because this affidavit is filed in December as on this date. Total number of माननीय सदस्य, PDF page 9. PDF page, my lord, is 98. PDF page, there is a chart, my lord. There is a chart. There is a hazy chart, my lord. There is a hazy chart, my lord. It's a मिल पाएगा कि नहीं पाएगा, scanning of a Xerox, scanning of a Xerox. Total number of inquiries initiated. Total number of inquiries initiated January 66 to March 70. January 66 to March 71. 52 lakhs. आग्रह करना चाहता हूँ माननीय 5 lakh. 5 lakh 20,000 number of inquiries completed, 5 lakh 22,320, 5 lakh 22,000 number of cases referred to the foreigners tribunal, number of cases disposed of by the tribunal, 31,105, 31,000 number of persons declared foreign, number of persons declared foreigners to January 166 relating to March 24 to March 32,000 currently under construction 969 number of persons whose names were sent for deletion from the electoral rolls, the same number electoral rolls, the same number from the date of decentralized. Total number of persons registered with the registering authority registered 13,912. 13,000 number of persons declared as bona fide Indian citizens for period related to January 1, for period related to January 1, 2471 to March 27,071. 27 number of total number of. It was an obstacle for the speed of the highway because it was meant to be an express highway.
I request through you, sir. Who got citizenship as of the date of this? Who got citizenship as of the date of this? Population or to anyone for that matter. And 11,000 I request Honorable Minister consider providing for a service road. Just a service road. Details of With cases no additional pertaining exits to or entries to cases highways. pertaining Land to is also the being applied difficulties. for the same. It can accommodate a service road as well. That Without is the next. service road, the That is local next. That is population next. are currently That is enraged next. and do not look That at it is, as my a lord, road to development. alarming, and As my there are lord, only two next entries alarming and and is exits not from the covered by entire next 60 chart kilometer is stretch. not covered by Kindly, 6A. through you, sir, I request Honorable Minister to look into this matter and try and provide for it. Thank you, sir. Honorable Speaker Mahoday, basically the express highway is axis control, and the speed in the express highway is more than 100 kilometers, 120 kilometers. Now with the service road, there is a problem because already we are facing very crucial problem related with the road accident, which already you elaborated. Presently, unfortunately, in 2021, the number of road accident is 4,12,432, and in 2022 it is 4,61,312 accidents. That is 12% rise. Number of days, actually 2021 it was 1,53,972, and presently it comes to 1,68,491. The 10% is increase. Now the problem is that when the we second make the chart, express highway, is little alarming. there are huge people Now, Lord, demanding the for second increase chart, in the the speed. period from March Because they- 2571 some of the people driving referred to to the Mumbai IMD Express Highway tribunal. with the There speed were of 140 earlier kilometers, referred to the 160 IMD kilometers, and they tribunal. are There asking were me that earlier you should relax the law related with the speed. At the same time, there is demand. Earlier, Some of the there people was are telling me IMD you reduce the tribunal, speed, which was and earlier that is in the reason the Sonowal. There was accidents are IMD tribunal. Now the But there was problem a is that tribunal. at the Sonowal. same time, if we IMD can connect tribunal and service road, subsequently then again transferred to it will foreigners be a tribunal. problem. IMD tribunal and scrapping of by IMD considering the transferred to convenience foreigners of the scrapping people. means it was declared And as when you are scrapping of presenting IMD this problem to me, between 83 I will it was again declared recheck in July it, verify it, 31 and I will between try to find out the way 2004 out. to July. Total number One of thing is inquiries absolutely correct where I need 2004 or cooperation after from March. all the Total number of stakeholders related with road accident. on or after It is March very 6 lakh unfortunate. 771. It is a loss of GDP of 3.47%. 7 lakh 67,000. And the most unfortunate thing is 7 lakh 67,000. Number of inquiries completed under IMD Act and total number of inquiries completed under IMD Act and total 4,020. It is Number of cases referred to IMD tribunal or foreigners. Number of cases referred to IMD tribunal or foreigners. 4,19,041,050. Problem of human behavior. Number of cases disposed of by the IMD tribunal or foreigners. Number of cases disposed of by the IMD tribunal or foreigners 294. Number of persons declared foreigners 294. Illegal immigrants. Number on or after March 25 illegal immigrants. After March, the number of persons whose names were 35,000 for deletion from electoral rolls 35,969 for deletion. Then total number of persons declared as bona fide Indian total number of on or after as bona fide Indian citizens on or after 4,595,971. I just clarify this. 64 they may be falling within 6A. I just clarify this. Decision comes late. They may be falling within a tribunal but decision comes or late. There may be a challenge before the High Court, Supreme Court, remand, or there may be a challenge before the High Court. The total number of cases where alleged persons are not traceable. The total number of cases where alleged persons are not traceable. They enter from Assam and not spread all over. Mr. Diwan was enter from Assam and not spread all over. They have settled in Delhi. Some of them have not gone as back. They have settled in Delhi. Some of them have not gone as back. Total number of persons deported 2,447. Total number of persons deported is pending before the tribunal 47. But 2,30,000 number of cases pending before the tribunals. Now, subsequent affidavit says that we have increased the number of tribunals, etc. But something more definitely is the number of tribunals, etc. But something more definitely needs to be done. Now your lordship may come to the centre's affidavit dated now your December come to
The senator's affidavit dated 5th December 14, 5th December 2014. की गई अंतिम कार्रवाई दर्शाने वाले विवरण Both are of the same date. हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण Both are of the same date. Senator's affidavit December 2014 is 5th December 2014. Is 5th December 2014. Did we get that? सभापति महोदय Same volume, 1118 PDF page, 1118. Same volume, 1118. Just glance, take your lordships. Just glancing. Take your lordships. 2023-24 के संबंध just glancing. That's all. गृहकार Action plan for detection and deportation of illegal migrants. in Assam, action plan for detection and deportation of Bangladesh borders. Then detection of illegal migrants. Guarding procedure for detection of pre-71 migrants. So it's substantially the same viewpoint. Detection procedure for pre-71 going fast. So it's substantially the same viewpoint. Necessary, therefore. Procedure for detection post 71 is not necessary, therefore. What is the procedure for detection post 71? Deportation of declared illegal migrants. What is the procedure? Strengthening of foreign travel. Then deportation of declared illegal migrants. समिति का 250वां प्रतिवेदन सभा में रखता हूँ। धन्यवाद। Then, next page of foreign travel. Detection of names of declared illegal migrants. From the, deletion of names of declared illegal migrants from electoral rolls, detection of names of declared illegal migrants from the, deletion of names of border guarding for check and control of illegal immigration. It's a porous border. Now, fencing is done of citizenship in Assam. Then effective border guarding for check and control of illegal immigration. It's a porous border. Now, fencing is done. There is the rest is like the steps which we have taken to ensure that there is less infiltration, but to prevent. Data is of 2014. The rest is the steps which we have taken to ensure that there is less infiltration, but this data is the 2008 data. What is the present exactly implemented? 2,13,000 cases were pending and 2,31,000 in 2004. State of Assam, what is the up-to-date data? How many have been that will indicate 2,30,000 were pending because now post 6-year constitutional validity is one aspect. Yes, but as Mr. Sullivan has also said, because now again Chaudhary has argued 6-year constitutional validity is one aspect. But denying the gravity of the problem as what it is. So if you want to know from the government of India what are we doing to not just about changing the gravity of the problem as it is one aspect, cultural aspect. So but see the burden of the existing resources. Those who should go to Indian citizens are now being unauthorizedly shared by someone comes only to share the resources. Those who should go to Indian citizens are now being unauthorizedly shared by someone who comes only to share the resources. जन्म लिया है वैसे तो ये बीमारी पश्चिमी देशों की है इस बुराई व सामाजिक बुराई को लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो लोग महिला या पुरुष बिना शादी के साथ रहते हैं There is one affidavit of 2018 but लेकिन यह बुराई अब हमारे यहाँ भी तेजी से फैल रही है इसका नतीजा भी भयानक होता है There is one affidavit of 2018 सामने आया था जिसमें दोनों रिलेशनशिप में रहते थे ऐसा कोई उदाहरण नहीं है बल्कि रोजाना कोई ना कोई केस सामने आ जाते हैं इससे हमारा कल्चर तो बर्बाद हो ही रहा है समाज में नफरत व बुराई भी फैल रही है दुनिया हमें जिस सभ्यता व संस्कृति के लिए जानती थी अगर यही हाल रहा तो हमारी संस्कृति एक दिन दम तोड़ देगी और हमारे उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा इस संबंध में मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ जल्द से जल्द कानून बनाया जाए ताकि समाज से ये खतरनाक बीमारी खत्म हो सके धन्यवाद श्री राजन विचारे जी मैं मेरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के को जोड़ने वाला महत्वाकांक्षी कलवा महत्वाकांक्षी प्रकल्प की तरह आपका ध्यान आकर्षित करना चाहने के लिए इस परियोजना
पूजन 10 दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब और हमारे शिवसेना के प्रमुख आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब के शुभ हाथों से हुआ था। इस परियोजना में MMRD द्वारा 1080 झोपड़ियों को पुनर्वसन के कारण इस परियोजना में देरी न होने के कारण इस परियोजना को 2 चरणों में किया गया था। 2018 में इस दीघा गांव रेलवे स्टेशन का काम शुरू हो गया। यह दीघा गांव रेलवे स्टेशन के पिछले 7-8 महीने से बनकर तैयार है। इस दीघा रेलवे स्टेशन के लिए 90 करोड़ का खर्चा भी किया गया है। ये स्टेशन शुरू न होने के कारण लोग ज्यादातर अपने खुद के गाड़ी से इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से यह ट्रैफिक जाम करने का सामना लोगों को करना पड़ता है। यहाँ के नागरिक भी इस उद्घाटन के प्रतीक्षा में कर रहे हैं। इस संबंध में आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब, रेलवे मंत्री, रेलवे राज्य मंत्री, मध्य रेलवे के प्रबंधक 4 बार स्मरण पत्र देने के बावजूद भी, ये स्टेशन पूरा होने के बावजूद भी ये काम शुरू नहीं किया गया। इस दीघा स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में IT कंपनियां हैं, रिलायंस है और बड़ी कंपनी वहाँ पे है। इसलिए नौकरी के लिए आने वाले श्रमिक वर्ग को, स्थानिक नागरिकों का पैसा और समय दोनों व्यर्थ हो रहा है। इसलिए रेलवे स्टेशन को न खुलने के सेंट्रल रेलवे का भी मिलने वाला राजस्व भी कम हो रहा है। हाल ही में दीघा गांव में ये अभियान किया गया था रेलवे स्टेशन चालू करने के लिए। उस समय हजारों नागरिकों ने यहाँ पे सहभाग लिया था। मैं आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब और हमारे रेलवे मंत्री से अनुरोध करता हूं कि पिछले 7-8 महीने से ये तैयार ये दीघा गांव रेलवे स्टेशन को तुरंत चालू करें। धन्यवाद। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि बात कृपया संक्षेप में। We are going to come to that. We come to that. Shri Ashok Kumar Rawat ji, the cultural impact, etc. We'll hear you very briefly. But your point will be that this was basically political. मैं मेरे मिश्रित संसदीय क्षेत्र में लगातार we'd like to hear you on that. And most important, we'll hear you very briefly. Why did you single out Assam? Basically, when we found yesterday that Bengal shares a much larger border with Bangladesh. Therefore, आनंद विहार एक्सप्रेस why did you single out the extent of some illegal migration to West Bengal as that West Bengal even was a much larger border? But did you have any cogent data to indicate, presumably, that the extent of illegal migration to West Bengal was minimal as compared to this? Therefore, we left it alone, or even more significant. Or did you have any cogent data to indicate that the extent of illegal migration to West Bengal was minimal as compared to this? Therefore, we left it alone. जिला स्टेशन पर भी 13,307 और 13,308 के साथ में और साथ ही 13,005 13,006 पंजाब मेल एक्सप्रेस के भी ठहराव की लगातार जनता द्वारा मांग की जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिल करके इसके लिए निवेदन भी किया है। मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि इन ट्रेनों के अप डाउन ठहराव का संबंधित रेलवे स्टेशनों पर दिए जाने हेतु प्रदान के लिए कृपा की है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। But more important than all, what are we doing from here? The grave danger that you might तहसील से नॉर्दर्न इंडिया में मेडिकल India doing in terms of ensuring that you have an impermeable border. More important than how much investment is the government doing from government of India into ensuring that the border becomes that of India in terms of what are the steps for the double border is taken. How much investment is the government is to what extent does the border need to ensuring that the border becomes that is the very possible. What are the executive steps of the government of India is because this is a to what problem is the border dependent जंक्शन आने पे बहुत प्रॉब्लम होती है। दूसरा सर कांट से ही जो अमरोहा जाने वाली रोड के ऊपर ये 443B जिसके ऊपर जाम लग जाता है और इतना बड़ा जाम लगता है कि हरिद्वार मार्ग
बाधित हो जाता है। 2014. ओवरब्रिज या Some answer. This is regarding border fencing. My Lord Justice Suryakanth. श्री महाबली सिंह जी, This is again, apropos as of the 2014. सभापति महोदय, This is regarding border fencing. My Lord Justice Suryakanth. समूह में Query, my Lord. देश के Apropos, my Lord. करोड़ों लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई के पैसा को बचत करके इन्वेस्ट किया था, जमा किया था महोदय। उनकी मैच्योरिटी Yes, भी that पूरी is होने given, के my Lord, in the बाद affidavit. आज करीब 12 Yes, साल yes. से What is the process? What is the procedure सहारा followed? समूह के देश भर के निवेशक धरना, Yes, my Lord, that is given, my Lord, in the आंदोलन, affidavit. अनशन प्रदर्शन करते Yes, करते yes. महोदय, What is the process? What is the कम से procedure कम followed? जो जमा किए हुए हैं सभापति महोदय, आंकड़ा के अनुसार जमा किए हुए लोग इलाज के अभाव में अपनी बेटी के शादी करने के लिए जो पैसे रखे थे, That is undertaken. वो That नहीं is मिल पाया, undertaken. जिसके They are चलते being अब subjected तक to the हजारों foreigners लोग tribunal jurisdiction. आत्महत्या कर चुके हैं देश में। लेकिन That इसके I'm not बाद reading. भी आज तक That is सहारा undertaken. समूह my ने Lord. That is undertaken. They are इन्वेस्टरों being को subjected पैसा to the आज foreigners तक नहीं tribunal. मुहैया Does करा पाए government of महोदय। India have जबकि data? स्थिति है महोदय Data, my Lord, So we understand the problems of all this as well. सहारा समूह है, Because जो हमारी culturally, you सरकार know, है, people who इससे look भी exactly like सुप्रीम us, take the कोर्ट same सहारा dress the के same मामले में data. फंसी हुई है, और we जो understand the इस problems of all देश this के as well. सहारा समूह में जो निवेशकों ने पैसा किया, वो पैसे के अभाव में आज This is खाने my पीना answer, महोदय। but not the government's इसलिए answer, my Lord, महोदय, because I could हम not सरकार pick it से from the आग्रह record. करना चाहते So far हैं as कि Bengal is देश के concerned, जो आम गरीब the जनता general है, discussion that I उसका have with क्या the गुनाह है opposition, महोदय? that उसने Assam तो अपना faced the पैसा problem and जान raised it करके at a इसलिए level, इन्वेस्ट because किया for the था। simple ये reason on the सरकार record का that एजेंसियां so है, far as ये Bengal is पैसा मेरा culturally, डूबेगा नहीं, Bangladesh लेकिन discussion they उन्हें have आज were ऐसा so लग different रहा है that कि Assam हमारी faced the सरकार problem उन and raised it इन्वेस्टरों at को Bangladesh. पैसा दिलाने Their में language, their अपने food को habits, their असमर्थ dressing, साबित हो everything, रही है, culturally, जिसके they mingle चलते very easily. आज Number बहुत one, परिस्थिति number two, दयनीय were है। so different इसलिए हम that सदन it के maybe माध्यम there is no से identify. सरकार In से the case आग्रह of करना Bangladesh, चाहते हैं, their language, their food habits, their government dressing, not everything, सवाल है महोदय, मुझे they mingle जानकारी very है easily. कि Number one. सबसे ज्यादा Number two, इन्वेस्टर because of यूपी और that, बिहार के maybe हैं। there is no यूपी के कम uproar से or कम something. महोदय, एक But मिनट that बहुत does not गंभीर मामला justify है। Between the यूपी government के कम not से taking कम steps. 85 must लाख admit. लोगों ने No, no, he is agreeing with you. He says 2,200 करोड़ Bengal. रुपया इन्वेस्ट किया है। बिहार के 55 लाख लोगों ने That's why I thought 1,500 I'll करोड़ clarify. रुपया I got your इन्वेस्ट point. किया I है। realize what you इनमें mean. से कितने लोग पैसे के अभाव में, now इलाज के अभाव में No, no, he is दम agreeing तोड़ with दिए you. He says महोदय। Bengal. इसलिए हम सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते Write it हैं, down under 14. You just try to West Bengal what you have done. Your point. You realize what you have done. Illegal immigration in West Bengal. आप ऐसी अपील मत कीजिए, माननीय सांसद, सबका अपना विवेक है सभी माननीय सदस्यों का। आप भेज दीजिए, आप अपने से भेज दीजिए। We are going beyond the यहाँ मेरे क्षेत्र में immigration. ठीक है, What are we ओके। doing? आपकी Why? बात पूरी हो First, गई। you want to know. जी 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 Addhyaksh Mहोदय, मेरे Parliament then legality in West Bengal from the grant of citizenship. जो गए 55 साल किसानों को पानी नहीं मिल रहा था। मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब का। यहाँ 55 साल के बाद किसानों को पानी मिला, इसके लिए किसान आनंदित है। और आनंदित होने से मैं देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब जो वो टाइम के मंत्री है, हमारे महाराष्ट्र के नेता नितिन गडकरी साहब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का अभिनंदन करेगा कि 55 साल के बाद 182 गांव को पानी मिला। ये पानी मिलने के बाद मेरे संसदीय क्षेत्र में जो घाट पाते का पानी है, Preparation was on the validity part and legal part, but matter may not end today. So we like undertake to file an affidavit of the authorized officer, latest by tomorrow or day after.
और नगर on all questions. We would like an कराएंगे updated, तो validity part and किसानों को legal लाभ part. होगा। But मैं matter may not आपसे end विनती today. करता हूँ we'd like कि to 2005 में महाराष्ट्र में authorized समाज on जल the वितरण not अधिनियम latest कायदा by पास tomorrow होगा। order. what is the उसे updated position? on किसानों all को all हमारा border हक है। fencing. We would like it ब्रिटिशकालीन updated जो because सरकार this is also statements from the शासन था उसने we get all these अकाल matters पीड़ित which come तहसील out है for us हमारी every day उसको doing पानी देने about का निर्णय किया फिर 2005 का कायदा border किया fencing. वो It is जो what in bail because ब्रिटिशों they're ने न्याय how दिया था far is हमारे the border लिए fencing जो in their तहसील है हमारे because जो it's also cattle अकोला smuggling, एक so-called संगम में cattle रहता है smuggling. We get all these कोपरगांव governments which come up है before या us every day. Also had cases राहुरी about recall of our own श्रीरामपुर और paramilitary नेवासा के लिए न्याय forces, दिया था officers being वो involved न्याय with that. 2005 Bail का people काला every कानून पास करने के बाद जो हमारा पानी कम हो गया पानी उपलब्ध करने के लिए मेरा एक सुझाव है involvement with कि the जो घाट माते का we पानी also had उपलब्ध cases कराए of recall of उसके our लिए मैं own आपको paramilitary विनती forces. करता हूँ Bengal कि party involved with 2005 that. में जो Those people have been मराठवाड़े में taken. I एक think गायकवाड़ all निजाम states बनाया are गया right. उसमें I 100 undertake that पानी Home उपलब्ध Secretary will file है an महाराष्ट्र affidavit. में जो नासिक नगर का पानी उपलब्ध है वो 80 One second, we will come to Tripura in और a ये moment. पानी Who's appearing for the उपलब्ध state of होने West से Bengal? हमारे को दिक्कत हो रही है मैं आपसे I think माध्यम all से states ये are part. बोलना चाहता हूँ 115 टीएमसी पानी आ रहा All है states तो are part. हमारे जो तहसील है गोदावरी है West Bengal गोवा filed an है पौरा नदी है affidavit. One उसके second, we will come to ऊपर Tripura एक in a moment. कोल्हापुरी Who's बात appearing for the करके state of West जो Bengal? 15 टीएमसी पानी अड़ा के हमारे किसानों को न्याय मिले और 5 टीएमसी पानी जो अतिरिक्त Have you filed पानी an है affidavit? जो All संगम states are में parties. कोपरगांव है या West Bengal filed an रहता है affidavit in this case. ये श्रीरामपुर तहसील है उसको पानी देने के लिए 5 टीएमसी पानी उपलब्ध करा के ये किसानों state is a वंचित party, हुए Lord. किसान है But I will, my lord, I assure your lordship, the Home Secretary will file an affidavit on all these concerns. would like to have affidavit from them also. विनंती करूंगा From the state of West Bengal also, 115 their टीएमसी पानी applicants can उपलब्ध be करा wanted. के Certainly, but हमारे को the reason 20 is टीएमसी पानी एक Forget about anything else. State is a party. 15 Lordships are a TMC I will, my lord, पानी God, I assure your lordship, पानी the नासिक को Home Secretary will file an देंगे affidavit बाकी जो on all बचेगा these पानी है concerns. जो This आप would be a part of जो fundamental मराठवाड़ी rights of गायकवाड़ी large है, section of ये citizens, तुरंत my lord, आप in large, महाराष्ट्र शासन को निर्देश कीजिए in वो several, प्रस्ताव not मंगा anything के else. Where राज्य the की lordships ओर are से a वो तुरंत constitutional मंगा के court, सौ the मानने rights चाहिए of fundamental धन्यवाद are being shared only on economic grounds. Now, This would be a part of rapid fundamental fire rights now of on your large argument to section of your citizens, response to constitutional large You've thrown out the statutory several scheme, right? states आपल्या माध्यमातून धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यामध्ये challenge are being shared only on economic grounds. Volume एक सुरत मुंबई राष्ट्रीय महामार्ग आणि दुसरा सोलापूर volume 2A. तुळजापूर धाराशिव And I'll, my lord, as your lordship says, या rapid दोन fire, प्रकल्पाच्या भूमी I'll skip, my lord, what is, संपादनाच्या होत असलेल्या they may be अन्यायाबाबत treated as read, my lord, केंद्र but सरकारचं my lord, my written submissions, अध्यक्ष volume महोदय या दोन्ही 2A. प्रकल्पाचं भूसंपादन त्या ठिकाणी प्रक्रिया चालू आहे 2A, my lord. या And I'll, my भूसंपादन lord, as your lordship प्रक्रियेमध्ये says, मोठ्या rapid fire, प्रमाणात I'll शेतकऱ्यांची मागणी आहे skip, my lord, what is, की त्यांची जमीन they may ही be थेट treated as खरेदीच्या read, my lord, पद्धतीने त्या but ठिकाणी संपादित केली जावी त्याच्या पाठीमागचं कारण असं आहे की थेट खरेदीने जर भूमीचं संपादन झालं तर शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीच्या किमतीच्या 5 पट त्या ठिकाणी रक्कम मिळते पण दुर्दैवानं त्या ठिकाणी थेट खरेदीनं जमिनीचं संपादन न करता त्या ठिकाणी सक्तीचं भूसंपादन त्या to ठिकाणी page केलं 8. जातंय I'm skipping, my lord, whatever is not relevant immediately. Lord, enactment of section 6A, the history, the background behind it, my lord, there was a debate in parliament. Your lordships may not get much on that, my lord, except that बारामती फलटण नवीन रेल्वे I'll मार्ग just, my lord, paraphrase for वदासा that, your lordships गडचिरोली may not नवीन have ब्रॉडगेज to रेल्वे to page मार्ग A. I'm skipping, my lord, whatever is not relevant immediately. Number 2, enactment of section 6, the relevant point of time, the background behind it, my lord, there was a debate in parliament. Your lordships may not get much on that, my lord, except most important, my lord, your lordships will get at page 10, my lord, paraphrase was an argument of article 11. A, Assam record provided this amendment is virtually amending article 4 and 5. Relevant point that was the war 4, 5 and 6. 5 and 6. So that was, my lord, dealt with. And when 6A was important, my lord, by the then Home Minister, page 10. Please see, my lord, page 9, article 11. S.B. Chavan, the then Home Minister. This amendment, page 10, my lord, virtually amending article 4 and 5. जेव्हा की शेतकऱ्यांची मागणी आहे की 4, 5 and 6. 5 and 6. Yeah, lots of that was, my lord, dealt with.
when I'm also referring to Article 11 of the Constitution, which clearly lays down 9 that government is within its command powers to enact Home Ministry legislation conferring or terminating the citizenship, page 10, any of the rights which a citizen can possibly have. So this is a very wide power which has been provided for. There is no question of any infirmity under the Constitution to Article 11 of the other law, which clearly ties down that government is within its own power to keep the rest, legislation conferring or terminating in the Constitution, page any of the rights which a citizen can possibly have. So this is a very wide power which has been provided. There is no question of any infirmity in the Constitution or any other law. We have made for the time being stop a large number of infirmities who have been crossing over. The average rate comes to about 2,400 per month. All these people have been trying to cross, and we have been trying to push them across the border. There is no denying the fact that people have come. Whatever Bangladesh government might say, I can say without any fear of contradiction that in fact, who have large number of people have average rate, they had come in a very peculiar circumstance month, and that is why all these would not possibly afford cross and very harsh to push them across. That is why there is no denying the fact that the people have come, and that is why Bangladesh government might say, I can say without any fear of contradiction that in fact a large number of people have come. Admitting the position come in a very peculiar circumstances, and that is why we could not possibly afford to take very harsh attitude, and that is why conciliatory attitude had to be taken, and that is why legislation assistance. He says about we tried and searched up to 71, but the debates of Parliament position has continued even after 70. What is the statement of objection? At the foot of page 10, the old part, Sri Bhadra Pratap Singh, to give this unprecedented situation was not contemplated by 1955 Act. Therefore, this present amendment is trying to solve that situation. The debates of and Parliament is competent under Article 11 to enact this kind of a legislation. At the foot of page 10, Mr. P.S. Sangman is relevant. Bhadra Pratap 11. This unprecedented was MOS contemplated department by 1955. Members from therefore side and the other side, including I think Mr. Babu Reddy himself, and Parliament pointed out that Parliament is competent to decide on this all matters relating to citizenship. Then Mr. has been Sangman very expressly, unambiguously put forward in Article 11 of the MOS. Therefore, the constitutionality of this bill cannot be doubted. This side and the power of Parliament to enact such a bill cannot be challenged at all. I have pointed out on 11 let me complete my submission all matters relating to citizenship, and this has been very clearly, very expressly, unambiguously put forward in Article 11 of the Constitution. Therefore, the constitutionality of Parliament to enact such a bill cannot be challenged. On 11, they say that we have to debate to the Parliament in 5 How? You are not speaking about the subject you have mentioned. But I just orally point out and then show you a lot. There is a interesting point in debates when 11 was off. They say that we have to leave it to the Parliament if you are born or if you have come before a particular date. But then you are deemed to be a citizen. Article 5 and 6 talks of deemed citizenship. If you are born or if you have come before a particular, that was when the Constitution was framed. Subsequent to the Constitution, then there may be situations where the nation needs to confer citizenship on various other grounds, or take away somebody's citizenship on certain grounds. And therefore, when the Constitution was framed, subsequent to the Constitution, there may be situations where the nation needs to confer citizenship on various other grounds, or 11 is for future take away somebody's citizenship on certain grounds. And therefore, Article 11
உட்பட்டவர்களுக்கு நேரடியாக வசதி கிடைக்கும். சேலம் ரயில் நிலையத்தில் பிளாட்ஃபார்ம் 1 மற்றும் 2 ஆகியவற்றில் நகரும் படிக்கட்டு வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும். இதன் மூலம் வயதானவர், உடல்நலம் குறைந்தவர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் பயனடைவார்கள். சேலம் ரயில்வே கோட்டமாக இருந்தபோது அதன் வழியாக செல்லும் ரயில்களுக்கு EQ சேவையினை வழங்கிட பெங்களூர், திருவனந்தபுரம் மற்றும் பாலக்காடு ஆகிய கோட்டங்களையும் நம்பியுள்ள வேண்டியுள்ளது. எனவே சேலம் வழியாக செல்லும் அனைத்து ரயில்களும் EQ வசதி சேலத்திற்கு வழங்கிட வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஓமலூர் மேட்டூர் வழியிலே உள்ள லெவல் கிராசிங் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் Then why have 11 at all? கெம்ப்ளாஸ்ட் போன்ற நிறுவனங்களுக்கு அந்த பக்கம் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் செல்வதால் Then 6 and 7 is complete code. There cannot be any additional reasons for conferment of citizenship or textual reading. There is no provision for taking 6 and 7 where to be frozen in time. Then why have 11 at all? கொரோனா காலத்துக்கு முன்பு இருந்த வண்டியில் புறப்படும் நேரத்தை மீண்டும் 10:40 6 and 7 is complete code. There cannot be any additional reason for conferment of citizenship. Or there is no provision for taking away citizenship. But it will Article 11 would not cover only Pakistan, it will cover the entire region. Their answer would be that Article 6, there may be several citizens. For example, the argument was that once that basis that only with the date of 1948 is the close order. 11 covers Article 6 for the conferment of deemed citizens. The argument was the entire issue by the exercise of an ordinary legislative power, which that date of 19 July 1945 Bangladesh, which is that once the day 71 and prior to 19 July 1948 is the area of Bangladesh in Article 5 is a part of the conferment of deemed LDP. Then the argument is by the exercise of an ordinary legislative power, the period coverage that date of 19 was Pakistan, Bangladesh, by deeming citizenship 71 by the right of Bangladesh, it also is deemed the area of Bangladesh. And that deeming fiction transgress the limitation which has been prescribed. 2001 को 12.849.46 करोड़ रुपया की स्वीकृति प्रदान की गई। मुलाकाती साकार नहर निर्माण कार्य सुप्त अवस्था में रखा गया। मुलाकाती साकार नहर कुछ भाग में 3 एकरनामों के तहत एकरनामा संख्या SBD 1/2019-20 SBD 02/2019-20 तथा SBD 3/2009-1920 दिनांक 11/1/2000 के अंतर्गत कार्य प्रारंभ करने के एकरनामा 11/1/2020 को किया गया था। उस समय राज्य सरकार द्वारा 3 टनियल का निर्माण कार्य प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। एकरनामा नहीं होने के 3.5 वर्ष बीत जाने के उपरांत दिनांक 17/5/2023 को टनियल का निर्माण कार्य को बंद कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि महोदय मुड़ाकाटी साका नहर जादूगोड़ा मुसाबोनी डुमुरिया प्रखंड करीब 12,000 हेक्टेयर जमीन सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने जाने का प्रशासन से जो मुख्यतः आदिवासी किसानों के गाजिया स्थिति खरकाई नदी पर वर्ष 2019-20 में 500 करोड़ से लागत बराज बनकर तैयार है। पिछले 3.5 वर्ष में यदि मुड़ाकाटी साका नहर निर्माण कार्य पूरा हो गया होता तो गरीब किसानों का सिंचाई व्यवस्था हो गया होता। विगत 4 वर्षों से औपचारिक रूप से जल संसाधन विभाग रांची द्वारा प्रधानमंत्री सिंचाई योजना अंतर्गत सुवर्णरेखा परियोजना के लिए अतिरिक्त 1 मिलियन केंद्रीय अनुदान प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया। दिनांक and they say very categorically while drafting the constitution by 11 article 11 that we may not be able to conceive of situations which may arise in future. That point of those पूरा करने का निर्णय किया गया था। अतः महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार को commencement of the उपरोक्त तथ्यों को and they say very categorically while drafting the constitution by 11 article we may not be able to conceive of situations which may arise in future. Initially when it was introduced as a draft, that point of it say those circumstances
further provision governing citizens, The ambit would be to all countries, which was deleted consciously. But just give me 5-10 minutes. Please come to page 12, 14 of my recent. 13 starts with drafting history of part 2. The entire part 2, initially when it was introduced as Article 11, it said further provision governing citizens. Para 37, which was deleted consciously. Just give me 5-10 minutes. Please come to page 12. On 29th April 47, while moving clause 3, Sardar Patel requested that the following should be added to clause 3, thereby empowering the union. Further provision governing union citizenship may be made by laws of the nation. This was, my lord, the beginning of Para 37. This was conceived by Sardar Patel. So thereafter, your lordships may directly come to, on 29th April 47, while moving clause 3, it was referred to a committee. Requested that the following should be added to clause 3, thereby empowering the union. Further provision governing union and the redrafted clause by the laws of the nation. This was the beginning of Article 11. For three different committees by Article 11 issue. Thereafter, G.N. Rao directly come to all were eminent. This was referred to a committee. Munshi K.N. Kaju, धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान himself हमारी लोकसभा में and the redrafted clause by the committee. उजाड़ने की we were fortunate to have चाहता हूँ this जहाँ देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी thereafter, then what they suggested was every person born in India, Union, all were eminent and subject to its jurisdiction. Every person, either Munshi whose parents was at the time of such person's birth a citizen of Union, and every person naturalized in the Union shall be a citizen of Union. Further provisions regarding the acquisition and termination of Union citizens, eminence and intellect by the law of then what they suggested was every person born in India, thereafter, my lord, the union, it was redrafted jurisdiction. Every person either 44 whose parents was at para 3 on the person's birth, a citizen of further provisions, every person naturalized in the termination of shall be a citizen of union, may be made by union regarding the union law, that is, and parliamentary of union. Then 45. Meanwhile, the union and provincial constitution committee at their joint sitting on June 5, after appointed a subcommittee draft considered in detail the effect of June 3, that is, para 3 further provisions cover. The joint subcommittee met on June 8 and decided that the question of nationality and citizens union in the union should be examined. Then 45. Ad hoc committee, in light of the provincial constitution committee, the report submitted by the assembly on June 5 appointed a subcommittee considered incorporated the citizenship provisions contained in the memorandum without any change, except that the word union was replaced by the joint subcommittee met on June 8 and decided that the question of nationality and citizenship committees in the union should be re-examined by the ad hoc committee in this light of the page 16 in the report submitted by the assembly. In this connection, the committee quoted with approval the view of Calcutta law citizenship provision. It is not possible to define without any change the conditions of nationality, the word union, whether by birth or by the word federation. By the Constitution, if certain conditions are laid down by the Constitution, difficulties may arise regarding the interpretation. This is quoted. Futurely, in this connection, it may appear to be contrary to or to depart anyway from them. Quoted that approval, which is the view of Calcutta law. In our opinion, there is not possible to define specify who would be citizens of Indian Union, whether by birth or date when the Constitution if certain as in the laid down by the Irish, these cases may arise leave the law regarding nationality to be provided, which may appear by the legislation by the or depart in any way
accordance with accepted principles of private international. In our opinion, this gave birth to Article 11. It is now in the evaluation process. At the date when the Constitution comes into force, as the Constitution of para 48, when the draft and resolution, I will not read, the law regarding nationality to be provided amendments to by the legislation by the Rajendra Prasad was in accordance with accepted principles as a composite thing. Don't go one by one, but not relevant. But please come to para 50. It is now in the evaluation process. Am I with you? Yes. Para 50. The Constituent Assembly debates with regard to citizenship and especially Article 11. When the draft was draft Article 6, so somewhere there will be a reference of Article 6, but amendments to present 11 is illustrative and clearly points towards an overarching power is available to the Parliament. The following are the not relevant. Dr. Ambedkar, come to para 50. The President, sir, except one other article in the draft Constitution, I do not think the Constitution, any other article has given the drafting committee such a headache, especially Article 11. This particular it was draft article. I do not know how many drafts were prepared and how many were destroyed. 6 has been in a present over all the cases is illustrative was thought necessary and desirable to power being available. It is not the object following are the articles to lay down a permanent law of citizenship for this country. One other article is very categorical. I do not think the business of laying down a permanent law of citizenship such a has been left to Parliament. This particular as members will I do not know how the wording of Article 6 how many were destroyed as being earlier cover all the R of 11 which as I have thought necessary entire and desirable to cover. It is not the Parliament to determine by lay down a permanent law of citizenship for this country. Effect of Article 6 categorical that Parliament does not of laying down a permanent law of those who are declared to be citizens to Parliament of commencement of this Constitution from by article by the provisions of Article 5 earlier those that follow of Parliament may make altogether a new law embodying new principles. Determine they must not understand that it is the provisions that we are making. Effect of Article 6 date of commencement of this Constitution are going to be permanent or unalterable. Commencement of this all that we are doing by article to decide the provisions of Article 5 and those that follow. But Parliament may make altogether a new law embodying new principles. They must not understand that the provisions that we are making for citizenship on the date of commencement of this Rajendra Prasad are going highlighted permanently or unalterable. Therefore, suggest that amendments of this nature might also be left over to be dealt with by Parliament at a later stage, and we might confine ourselves to the limited question of laying down the qualification of citizenship on the day of Constitution came into force. As my Lord the Chief Justice, my Lord, Dr. Rajendra Prasad, my Lord. Only highlight my Lord, kindly come to page 9. There are other honorable members saying the same thing to be left over to be dealt with by Parliament Krishnan at a later Krishnan, and we might confine ourselves to the page 19 of laying down the qualification of citizenship on the day of Krishna Swami Ayya. The articles dealing with citizenship are therefore subject to any future nationality or citizenship law that may be passed by Parliament. Parliament has absolutely a free hand in enacting any law as to nationality or citizenship to the conditions of our country. It is not to be imagined that in a constitution dealing with several subjects, it is possible to deal with all the complicated problems that arise with citizenship are then, my Lord, therefore subject to any future nationality or citizenship part that may be passed by Parliament. Permanent Parliament qualifications laid down a free hand in Article 5 law as to nationality or citizenship suited to the conditions of our country. It is not to be imagined Article 6 dealing with 11 subjects. It is possible to deal with further all the complicated problems nothing contained arise. Article 6 makes it absolutely clear that notwithstanding the provisions of this highlighted part, Parliament will have power to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship.
Any defects that experience 5 to 5 may disclose. Article 6 can therefore 11 presently rectified. The by modification further becomes more nothing contained. Article 6 makes it absolutely clear that notwithstanding the provisions of this article, Parliament will have power to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters related. Now, my lord, any defects that your lordships have may disclose when my learned was distinguishing the judgment which I was to cite, have seen, my lord, at page 21. They need to take away Citizenship interpretation of Article 11. In this case, my lord, Izar Ahmed Khan versus Union of India. As the government my lord, this is the judgment by 5 honorable judges, my lord. Unrest and confusion. I'll read the highlighted part. Your lordships have, my lord, on the last day when my learned friend was distinguishing the judgment by my lord, I was to cite, have seen, my lord, at page 21. Lord, at page 21, bottom highlighted 11. Article 11 and recognizes the power of Parliament to make any provision, the judgment by 5, on not only acquisition but also termination of citizenship. I read the highlighted as well as all matters related to citizenship. Thus, it would be open to the Parliament to affect the rights of citizenship and provisions made by the parliamentary statute. In that behalf, cannot be in one bottom the highlighted that they are inconsistent with provisions contained in Article 5 the power of Parliament to make any provision with respect to not only acquisition but also termination of citizenship can add to all matters relating to citizenship. Thus, it would be open to the Parliament to affect the rights of citizenship and provisions made by the Parliament in this connection. In that behalf, cannot be impeached on the ground 11 they are inconsistent with part 2 contained in order to make it clear that the sovereign right of Parliament to deal with citizenship and all questions connected with it is not impaired by the rest of the provisions of the state part. Therefore, the sovereign legislative competence of the Parliament to deal with the topic of citizenship, which is part of entry 17 in this connection of the 7th schedule, is very wide and not fettered by the provisions of Article 5 in order to make it clear that the sovereign right of Parliament, this aspect of the matter may have relevance, and all questions connected with it raised by the is not impaired by the rest. Article 19 are affected by the impugn. Therefore, the sovereign legislative competence of the Parliament, this is the only judgment on Article 11, but is part even textually in list 1 keeping in mind the 7th schedule is very wide and not fettered by the provisions of Article 5 to 10 of Part 2 of the Constitution. This aspect of the matter may have relevance. We live dealing with the contention raised by the petitioner. So, my lord, this distinction between the Article 19 or conferring may pale into executive. My lord, this is the only judgment, my lord, on Article 11. I have just given, my lord, textually and keeping in mind the words which are used in drafting Article 11. So, the only inevitable conclusion which starts with nothing in the foregoing cannot conceive of many are used only in these, this distinction between deeming or conferring, so it is not elevated to that level. That's all. Nothing beyond terms may not read. I have just given Article 324, which are seriously 11 pressed, my lord. So I'll not trouble your lordships with that. Nothing in the foregoing provision. Please directly come to page 29. Only in these articles. और मुझे विश्वास है कि भारत के 140 so it is not elevated to that level. That's all. Nothing beyond turns upon that. Sarvanand Sonowal judgment I have just said. Sarvanand Sonowal judgment was praised, so I will not trouble your lordships with that. And the argument was, please directly come to page 29, my lords. See the situation on ground. This act does not fulfill the object it seeks to achieve. उनकी चीख लेकर के मैं सदन के भीतर आया हूं on that ground Sarvanand Sonowal was
Lord, Sarvanand Sonowal judgment I have just said. That act was declared. Sonowal judgment was concerned with one fact. Supports that this is a huge problem was, but your lordships are not at now concerned with situation on ground. This correctness or otherwise does not fulfill the object it seeks to achieve. Scope of judicial review in relation to treatment of foreigners, I may not ground trouble your lordships. Please treat this as read, my lord, because your lordships are aware of the settled propositions of law on this. Please come support that this is a huge problem. But your lordships are not right now concerned with correctness or otherwise of the challenge concerning Article 14. My lord, scope of judicial review in relation to treatment of foreigners, my lord, I may not trouble your lordships with. Where I read, my lord, only one or two versions. Your lordships at page 35, settled propositions of law. Judgment by 7 honorable judges. Special court bill. Page Lord 34. Challenge concerning Article 14. लगातार पिछले 35 वर्ष से शासन कर रही है वो इन only गरीबों की चीख है महोदय 71. There are numerous cases I will deal with only one or different facets of problems arising under 35 which set out is a judgment by applicable to 7 honorable commonly arise under that artificial court. Among those may be mentioned the decisions of so and so. Then my lord highlighted but as observed by Justice Matthew in the last mentioned case, it would be an idle parade of familiar learning only to review the there are numerous cases deal with different facets of problems arising under constitutional assurance of equality set of the law has been applied. But thereafter arise under that at page among those may be mentioned the honorable court 7 judge bench highlighted earmarks as of what are the contours on the last mentioned case. It would be an idle parade of familiar learning examining the challenge of the Article 14 multitudinous relevant, my lord, all are relevant cases. Please come to 5. Constitutional assurance of equality before the law has been applied. On the classification, thereafter, my lord, argument was page the classification 36. The honorable court, 7 judge bench, earmark process of what are the contours by the process of classification. The state has the power of determining who should be regarded as a class for the purposes of relevant and in relation to a law next come to 5 particular subjects. This power, no doubt, in some classification likely to produce some inequality. But if a law deals with the liberties of a number of well-defined classes, the process it is not open to the charge of by the process of classification on the ground has the power of application to others. Should be regarded as a classification thus means segregation in classes and in relation to a systematic relation usually found in common properties, power and no characteristics. In some degree postulates a rational basis inequality does not mean but herding together of certain persons and classes arbitrary classes. The law can make and set apart the classes according to the needs and on the grounds of the it has no and as suggested by a classification thus means can recognize segregation in degree of evil which have but the classification will never be arbitrary usually found in common property or evasive and character. Classification must not be arbitrary, a rational basis and does not mean etc. together of persons well aware of the proposition. So I will not law can make and set apart that. Please will not come to the needs and case of the Ajayabs and as suggested by experience at the foot. It can recognize even degree of evil, but the classification should never be arbitrary, artificial, or evasive. The classification must not be arbitrary, lays down substantially the same test. Your lordships are well aware of the proposition. Come to page, so I will not trouble your lordships with that. Under classification, I am duty bound to answer on facts on the question of Bengal foot. But my legal proposition, my lord,
is this. And I will do that, Manoj, in the within a day or two. That Manoj lays down substantially the same thing. Manoj, I may even, Manoj, but the argument is, instead of one, you should have done it for 5. So argument is of under classification. Manoj, I am duty bound to answer. Require facts to be made the question of Bengal, but would not be a ground to. But my legal proposition, Manoj, is this, and I will do that, Manoj, in the first judgment is by way of an affidavit, and Venugopal and Ravi Verma Raja versus Union. But the argument is, and please at page 41, of one you should have done it for 5. Highlighted. So argument is of underclassification. And the chairman of the University Grants Commission may require law to be made for others, but underclassification is always not about the law already made ground of a successful challenge on Article 40. Who do not get scholarships through the but the mere first judgment is the law could have been extended to another class of persons who have certain characteristics at page 41 similar to the section of highlighted have not been so included is not a ground for striking down the law. In treating a Hindu undivided family as a unit of taxation is under the Expenditure Tax Act and not a non-Hindu undivided family, the Parliament has not attempted an obvious inequality. Could have been Ajay Kumar Banerjee, another class of persons highlighted who have certain characteristics which similar to does not prevent legislature from introducing a reform, that is by not applying the legislation to some institutions or objects or areas as a unit of taxation under the Expenditure Tax Act and not a non-Hindu undivided election can be sustained on not historical reasons obvious or reasons of administrative Ajay Kumar Banerjee or only highlighted piecemeal method of introducing reforms. Maybe Article 14 does not prevent legislation from introducing a reform, that is by applying the legislation to some institutions or objects or areas only in according to exigency of special provision for one state, historically because of Assam Accord on historical reasons or reasons of administrative exigency or piecemeal method of introducing reforms. Maybe for other states law may come, but that would not make 6A ultra. सभापति जी मैं आपका ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र श्री Ambika Mills I'll not read that. Then territorial classification would get historically because of Assam Accord, etc. Page 43. Territorial classification is justified. Look, this is my submission in law. Look, factually, since it has fallen from the court, and the court, which is a constitutional court, taking care of fundamental rights of everyone present here or otherwise. Lord, I must answer regarding territorial classification by only 143. Why not Tripura? Page 40. Odial territorial classification is justified. This is my submission in highlighted part. Factually, historical considerations and compulsions do justify inequality of fundamental rights of everyone. Next para, I must answer. And if after reorganization of states and integration of the PEPS only in the state of Punjab, different laws apply to different parts of the state, that is due to historical reasons, and that has always been recognized as a proper basis considerations and compulsions do justify inequality and state of MP versus Gopal Shubha. Next page, next para, highlighted part. And if after coming to next page, page integration of the legislature in the state of Punjab, the legislature has always the power to make special laws. It is due to historical objects and then has always been recognized as authority proper basis classified persons, objects or transactions upon which the law is intended state of MP versus differential treatment becomes unlawful only when it is arbitrary or not supported by a rational relation with the object of the legislature. This court has held in several cases. The legislature has always the power to laws issues laws reasonably justified particular historical reasons, and for that geographical has authority founded on those historical reasons or transactions upon which the law is intended to apply. Same differential treatment becomes unlawful only when it is arbitrary or not supported that
by a rational relation with the object or the rest are settled propositions. This court has held in several cases. I may skip where application of just equal laws gets reasonably justified for historical reasons. A geographical one submission would have on those historical reasons would be upheld. ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ one last point, ਮੌਸਮ ਹੋਊਗਾ page 49. ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੰਥਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਟਿਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ our side of law is made only for Assam. I just paraphrase my submission. ਕੋਈ 1000 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ But one last point. There are several provisions under the Constitution of India which applies only to particular states, including the state of Assam. There can be a law. A law is made only for Assam. I just paraphrase my 49. I have pointed out the provisions which are applicable only to Assam. नहीं बधाई तो सभी को देनी चाहिए फिर आप अपनी बात कहिए This is on the classification based on terms under the Constitution of India which applies only to particular states, including the state of Assam. So there can be a law applicable only to one state. Page 49, I have pointed out the provisions which are applicable only to Assam. Janmotsav was celebrated in my constituency. This is on the classification based on territory. 2023. On behalf of my Brajwasis and myself, I would like to thank these are my respectful submissions. Only one thing, as a last thing, the event so memorable as I have some kind of an apprehension. I would request the interveners to keep in mind that they are here to protect who released a 6A, commemorative stamp meaning on Mirabai and they also a represent coin people that marks from her 51 to 71 birth anniversary. and not post Mathura being 71. Such a culturally vibrant and dynamic may not be region. such that though we are on the same side, I have to give rejoinder to and I'm grateful to as I that's all. I would request the interveners to keep in mind her life that by they are my here troop to and myself. protect And it was a humble meaning offer, they but your represent appreciation and words of from encouragement 51 to overwhelmed 70 each one of us. So and we are not really post fortunate. 71. In fact, your presence at the Janmotsav brought would also alive be a the part memories of my our affidavit people though we are on the same towards side. Mira, I have to give who was rejoinder to even less you. important in general by the That's all. citizens of the law. The validity of Sant Mirabai how long would you take, Mr. and stay in Vrindavan in the 16th century had contributed immensely towards the recreation and enrichment of the Bhakti movement that would last for ages to come. Her unwavering devotion to Lord Krishna despite facing great hurdles and it would also be a part of my affidavit which I filed ask them to complete the rejoinder. The Honorable Prime Minister in his brief address on the occasion had rightly captured Sant Mirabai's impact on the cultural religious significance in the country when he said that Mirabai had nurtured the consciousness of India with her devotion and spirit. People of Braj, we are all proud that our Honorable Prime Minister has expressed his desire to support the all-round development of the land of Braj. My heartful gratitude to Modi ji for his consistent effort and his tireless work for the people of Bharat. With your kind bhakti, each one of us is certain that our rich heritage will be forever preserved. 15 minutes. So we much. start at 2 o'clock. Yes. श्री राम कृपाल यादव जी कृपया समय का ध्यान रखें नहीं तो अधिक माननीय सांसद नहीं बोल माननीय सभापति महोदय मैं सबसे पहले आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक महत्वपूर्ण अपने संसदीय क्षेत्र मुझे याद दी है महोदय मैं पीड़ा के साथ आपके माध्यम से रेल मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं मेरे संसदीय बहुत ही पुराना परियोजना है जो रेल से संबंधित है वो है बीटा से औरंगाबाद रेल लाइन सर ये केवल मेरे ही संसदीय क्षेत्र से इसका लाभ नहीं होने वाला है बल्कि सर पाटलिपुत्रा के अलावा जहानाबाद काराकाट औरंगाबाद
all the data available in the compilation. लगभग 48 किलोमीटर है 2007 में इसकी स्वीकृति मिली, कई वर्ष हो गए नहीं हुआ। अभी जो है सर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी बड़े पैमाने पर चल रहा है योजना को लागू करने के लिए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, इस समय सरकार अगर सरकार 2007 में धनराशि देती है, धनराशि नहीं देने की वजह से पूर्ववर्ती सरकार के कारणों की वजह से नहीं लागू होता। मैं आपके माध्यम से निवेदन पूर्वक आग्रह करना चाहता हूँ, जन आंदोलन को देखते हुए इस योजना को लागू किया जाए, आवंटित करे सरकार धनराशि ताकि वहाँ के सपना साकार हो सके। One page and not today but tomorrow, because I have longer than one page which I would like to edit down to one page. Mr. Sibal and Ms. Jaisingh's brief note, and anybody else who has had one pager, please over lunch, give it to the nodal council. There's a nodal council in this matter. Nodal council will upload it and give it to the If I may be permitted to upload the one pager not today but tomorrow, because I have longer than one page which I would like to edit down to one page. अधिक महिला स्वयं सहायक गोष्ठी रे 70 लाख रु अधिक महिला संगठित होइछंती। मु मिशन शक्तिर महिला स्वयं सहायक गोष्ठी को प्रतिनिधित्व करुथिबा एही अगस्त गृहर निर्वाचित सदस्य हेबारु एक उदाहरण। अधिकंतु मान्यवर प्रधानमंत्री 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थनीतिर स्वप्न को साकार करिबा पाई महिला मानकर समस्त सशक्तिकरण आवश्यक। राजनैतिक सामाजिक तथा अर्थनैतिक दृष्टि शताब्दीरु वंचित होई आसुथिबा महिला उन्नति पाई प्रकल्प ठीक एवं आत्मा सहित यही आईन करबाकू भारत सरकार को मोर निवेदन। वंदे उत्कल जननी जय जगन्नाथ। श्री SS आलूवालिया जी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बंगाली में बोलना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, আমি বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা সংসদীয় ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত হয়েছি। আমার এলাকাটা পশ্চিম বাংলার, ইট ইজ নোন অ্যাজ গ্রেনারি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, অর্থাৎ ধানের বাটি। আমাদের গত বছরে 31 অক্টোবর 2022 সালে আমাদের পাশেরই মুলুক নেপালকে আমরা সাহায্যের জন্য প্রায় 6 লক্ষ মেট্রিক টন ধান ডিউটি ফ্রি দিয়েছি, তার নোটিফিকেশন হয়েছে। যার প্রতিফল কি হয়েছে যে কি ধান ভাঙলে চাল বেরোয়, আর ভাঙা চাল বেরোয়, ব্রান বেরোয়, আর ব্রান থেকে ব্রান অয়েল বেরোয়, আর ভাঙা চাল থেকে ইথেনল তৈরি হয়। তারপর ওই ভাঙা চাল থেকে ব্রান থেকে অয়েল বার করার পর খলি বেরোয়, যেটা পশুদের আহারের জন্য প্রয়োগ করে। ধান এক্সপোর্ট হয়ে গেলে আমাদের এলাকার যে ধানের মিলগুলো আছে, অর্থাৎ রাইস মিলগুলো যেগুলো আছে তার উপরে এফেক্ট হয়েছে, সলভেন্ট প্লান্টের উপরে এফেক্ট হয়েছে, ইথেনল প্লান্টের উপরে এফেক্ট হয়েছে। এখন শুনেছি আবার 10 লক্ষ টন তারা ডিউটি ফ্রি ধান চাইছে। আমার আপনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন আছে, বাণিজ্য বিভাগকে আর বিত্ত মন্ত্রণালয়কে, যে দয়া করে এখানকার মানুষ সব বেকার হয়ে যাবে, এই যতগুলো মিল আছে বেকার হয়ে যাবে, আর আমাদের এলাকায় ধানের দাম বেড়ে যাবে এই মিল চালাবার জন্য। অর্থাৎ চালের দাম বাড়বে, সলভেন্ট প্লান্টের দাম, সলভেন্ট অয়েলের দাম বাড়বে, আর ইথেনলের দাম বাড়বে।
একে বাঁচাবার জন্য এই পুরনো অর্ডারকে নিরস্ত করা হোক, নতুন কোনো অর্ডার যাতে না দেওয়া হোক, এটাই আমার অনুরোধ। ধন্যবাদ। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बेमौसम बरसात मेरे अमरावती सहित विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, इस पूरे महाराष्ट्र में आज बेमौसम बरसात के कारण बहुत ज्यादा मेरे किसान भाई बहनों का, फसलों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सर, मैं विनती करती हूँ मेरी केंद्र सरकार से, राज्य सरकार अपनी पूरे प्रयत्न में है कि हमारे यहाँ पे सोयाबीन, कपास, चना, तूर, मूंग, प्याज, अंगूर, संतरा, उस दिन मैं नासिक गई, नासिक में बहुत ज्यादा नुकसान और आज भी बेमौसम बरसात है। हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर हमारे महाराष्ट्र के किसानों भाई बहनों को, उनको आर्थिक मदद करके, उनका कर्ज माफी करके या उनकी नुकसान भरपाई करके मेरे महाराष्ट्र के किसान भाई बहनों को मदत करिए। कारण मी ज्या क्षेत्रातून बिलॉंग करते ते पूर्ण अमरावतीमध्ये खूप जास्त पावसामुळे माझी अमरावतीचे शेतकऱ्यांचं खूप मोठं नुकसान आहे। तर तिथे बेमौसम जे बरसात तिथे आलेली आहे ते घोषित करून त्यांना सगळ्यांना सरसकट कर्जमाफी करून त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, एवढी केंद्र सरकारला आणि राज्य सरकारला मी विनंती करते। कारण की त्यांना आधार देणं आज आमच्या काळाची गरज आहे, नाही ते येणाऱ्या भविष्यामध्ये या देशामध्ये शेतकरी आपल्याला सापडत नाही, तेव्हा आपण खूप पस्तावू। पण आज आपण जर त्यांना मदत केली तर खूप मोठी मदत या शेतकरी भाऊ बहिणांना होईल। थँक्यू सर। जी Thank you, sir. Sir, I would like to point out the issues and concerns related with the plantation laborers in my constituency. Many of the times I raised this matter here. Sir, many of the plantations are in a severe crisis. Their management is not able to run the day-to-day affairs. Workers are not getting their gratuity. Last 10 years, they are not getting their gratuity benefit. That is not the benefit. That is the right of the plantation laborers, but the managements are not giving properly. That's why I urge upon the government to issue at least 50 crore rupees for getting the gratuity benefit to the plantation workers in my constituency. That is at Pirimedu. Thank you, sir. जी श्री अधीर रंजन चौधरी जी। पिछले 5 तारीख को सर सदन में प्रश्नकाल के दौरान ये संदेश आए कि हमारे देश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस 22 आइटम पे दिए जाते, उसमें जूट जिसके 1 क्विंटल की भाव 5,050 रुपया ये तय हुआ है। सर, मैं हिंदुस्तान की वो जिले से आते हैं जिस जिले में सबसे ज्यादा जूट का पैदावार होते हैं, और हुआ सर लाखों की तादाद में किसान, सिर्फ हमारा डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबादी नहीं बल्कि सारे बंगाल में ये जूट गुरुवार माना जाते, लेकिन सर जेसीआई उससे जूट नहीं खरीद करते। तो सर ये ब्यौरा देने के मतलब क्या है? अगर जेसीआई जूट उन लोगों से ना खरीदे तो वो बेचारे किसान जाए कहां? बाजार में बिचौलिया है, बाजार में महाजनों ने लूट रहे हैं। साथ साथ सर जूट बोर्ड, नेशनल जूट बोर्ड बहुत बारे बातें कहते हैं कि हम डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बना के मदद करके मार्केट एक्सपोजर देंगे, लेकिन वो भी किसानों के साथ, और हुआ जो गरीब लोग जो डाइवर्सिफाइड जूट प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उन लोग के साथ भी इस तरीके की धांधली कर रहे हैं। सर, इसके लिए ये आज जूट ग्रोअर के हालात दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं। मैं इस सदन से ये गुजारिश करूंगा और मंत्री को ये मेरा दरखास्त रहेंगे कि जब सदन में पेशकश किए जाते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस 5,050, तो कितने किसान, कितने जूट ग्रोअर ये 5,050 पैसा में रुपया में ये पाट बेचे हैं, इसका भी ब्यौरा देना चाहिए। माननीय सभापति महोदय जी, 1 मिनट प्लीज। इस सीमा का प्रत्येक आपने अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की चयन प्रक्रिया, इसमें ग्राम सभा का सर्वाधिक अंक प्राप्त व्यक्ति मेरिट के आधार पर शिक्षा मित्र बना है। शिक्षा मित्र पूरे मनोयोग से उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 23 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी माती जी की सरकार द्वारा कार्यरत सभी शिक्षा मित्रों को 2 वर्ष का बीटीसी प्रशिक्षण डाइट के माध्यम से कराया गया था। वर्तमान में शिक्षक की योग्यता
कि जो मानक एनसीटी द्वारा निर्धारित है वह मानक उत्तर प्रदेश के लगभग सभी शिक्षा मित्रों ने पूरे कर लिए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार केवल इस महंगाई में शिक्षा मित्रों से 10,000 रुपए प्रति माह मानदेय में कार्य करा रही है। जबकि अन्य राज्य जैसे बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि राज्यों में शिक्षा मित्रों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देकर समान कार्य, समान वेतन व अन्य सुविधाएं लागू की हैं। महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि पूरे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश राज्य में भी शिक्षा मित्रों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देकर समान कार्य, समान वेतन व अन्य सरकारी सुविधाएं प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साहू महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कई बार मैंने इस सदन में मेरे लोकसभा संसदीय क्षेत्र में मेरे दरंग डिस्ट्रिक्ट जो नोडल डिस्ट्रिक्ट भी है मेरा, वहां पर अभी तक रेल लाइन का कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो बार बार मैं उठा रहा हूं, उसका सर्वे भी हो गया है, सुना हूं, लेकिन अभी तक इसका क्या स्टेटस है अभी तक जानकारी नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं जल्द जानकारी नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं जल्द जानकारी नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं जल्द जानकारी नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं जल्द जानकारी नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं जल्द जानकारी नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं जल्द जानकारी नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं जल्द
करनी है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ